Hi everyone, नमस्कार मैं हूँ रोहन मेहता and thank you for joining the master class of quant investing. हमने we are on to the point कि every time कुछ ऐसा करते हैं जहाँ पे why our investing process and how the world is changing with quants. So I'll give you a glimpse on why buy and hold is not making a lot of sense now and why quant investing has changed the facet of investing. So, giving you a point, powered by, we are onto the advanced quant investing process. We have been into 20 years into the investing process. We are SEBI registered PMS company, also an RA company registered analyst. Research analyst company, and our 20 years of our life has been onto the quant investing side. So, just give you a milestone about what we have done till now to just give you a better thought process. We've been to 14 years of investments, more than 20 years now in my life, but total has been 14 years managing more than 1,000 crore of AUM, 500 plus investor families we manage. We are at 52 cities in India and we are at 9 international countries. We are also been the top performer across all the schemes in FY 26, 26, 25, 26 PMS of India. So I'll just take more faster stuffs into it to give you more better analysis. This has been the last financial year. Our data market has been -3%. One of our scheme is 14%, 20%, and 14% respectively. Last year had been a very tough year in the markets, and that year Quant did very specifically superior. Overall, it has done very well, but last year also it was a very tough time. But the Quant is something where things made great point. Our vision is to be a billion-dollar fund by growing 10x of our client value in 10 years by 25% CAGR. Our focus is purely on data and logic, no story and intuitions. So, what is the USP? Before we go to quant, just give you a glimpse of it. We have 100% transparent quant-based process. We only invest in human-friendly businesses where we don't invest in six type of business called animal killing, liquor, tobacco, hotels, casino, leather. We have pure bespoke investment solutions, very easy access to top management, and we don't have entry-exit loads anywhere. A brief profile about me, you can do Google about me, but my focus has been last 20 years has been an investing profile. There's been a core team from the top management to the research team. Uh, this is a very interesting basket to give you a understanding, and then we can go ahead. A lot of people feel that कब कहाँ investment करना चाहिए, ये बहुत interesting thought है जो हमारी team ने बनाई है. So 0 to 10 lakh is the time where we invest into insurance and fixed deposits. Protection is the first criteria. 10 lakh to 1 crore is a good segment for mutual funds and ETF, that is gold and silver. Build your base, grow steadily, don't take more risk. 1 crore to 100 crores is an interesting take of PMS to direct equities. So accelerate, go take calculated risk, and from 100 crores to 1,000 crores, you can go for, family office, derivatives, international investments, unlisted securities, and 1,000 crores plus you can do any of the stuff what you can think forward for. So here the point is that it's a very sweet spot of 1 crore to 100 crores where direct investment and quant investing makes more better proposition than anything else. यहाँ पे शायद buy and hold theory can make a good decent amount, yeah, ETFs can, but यहाँ पे you need more specific structure than an investing structure. I'll not go more into the fund transfer point. Let me come to the turtles advanced cons process. We will take 30-35 minutes to discuss on it. We will take a lot of question and answer from you to discuss on it. Kirti will moderate, and then you can ask anything. But the point over here is to make you an clean understanding on why turtle quant or quant process is going to change the facet of investing process in next 10 years. So generally, what is turtle quant PMS or versus traditional quant is, decision making is
इन ट्रेडिशनल इज मोर जजमेंट, मोर स्टोरी, मुझे ये लग रहा है। क्वांट इज प्योर एल्गोरिदम डेटा। वो एक कोट है ना जो मुझे बहुत पसंद है कि बेटा झूठ बोल सकता है पर डेटा नहीं झूठ बोल सकता है। सो in traditional PMSs or traditional thought process, this is a very big problem of, and in certain time it can go right also, means there's nothing wrong. But quant is very scientific. This is more like an art. रिसर्च प्रोसेस इज वेरी इन डेप्थ। ये हो सकता है एग्जिट आना बहुत टफ है, बहुत रिगरस है, जहाँ पे क्वांट में एंट्री एग्जिट इज प्योरली मैकेनिकल बेस। इट्स प्योरली ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इज, आपको, आप कैसे जज करोगे ये राइट है रॉन्ग है? यहाँ पे इट्स 100% ट्रांसपेरेंट कि ये मॉडल है तो बाय हुआ, ये मॉडल नहीं है तो बाय नहीं हुआ। consistency is on the mood, is on the, is on the age, sometimes it is on the emotions of fund manager। यहाँ पे mood is very consistent, there is no mood। मुझे एज अ फंड मैनेजर कभी लग जाता है कि यार ये स्टॉक नहीं लेना है या लेना है, but there is no mood over here, right? You have to buy it if it works, and if it, you have to sell if it doesn't work। So drawdown is varies by fund manager, this is very tactic, very thought process onto it। Yeah, this is a snippet of quant investment strategy in India. In 1989 in USA, there was no quant fund managers. 2013 was 14%, 23 is 35%. Roughly, we have got an idea, not very well documented, but it's 45% of US has now quant investing. India is only 1-2% today in quant investing process। Why it is so? Because इंडिया में अभी लास्ट 4-5 साल से डेटा बहुत अच्छा बनने लगा है। वी हैव मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव रियल डेटा, जो आज से तकरीबन कोविड के पहले इतना क्लैरिटी ऑफ डेटा नहीं था। आई थिंक 2014-15 से स्ट्रक्चर अच्छा चालू हो गया था, but I think so from 2020 the things have been really really very well। So now the things will start on। I'll give you another understanding on what is quant। बहुत लोग पूछते होंगे रोन quant क्या है, तो quant समझाना quant क्या होता है। I'll give you an example of health। In 1990s, our health expectancy was 60, roughly around 60, where all the medical decisions were taken by emotions। आप कहीं डॉक्टर के पास जाओ, वो चेक करेगा और then he will give you the medicine। Today, the biggest technology is being made on health because health is a very serious thing, and that is the reason India's expectancy of health of life is now 72 to roughly 74। It has gone very well in last 10 to 20 years। It has been expected that जैसे health industry इंडिया में टेक आ रही है, the 72 will go to roughly around 75 to 77 in next 10 years। Why? Because all the health related point is driven by technology, it's driven by data। जैसे आज मुझे किसी को कुछ हो जाता है तो वो डॉक्टर पहले बोलेगा कि आप रिपोर्ट लेके आओ, फिर ही मैं बात करूंगा। Now you are a good person, bad person, you are in this religion, that religion, you are rich, you are poor, doesn't matter। It's the data which makes the decision of health, not the individual। That exactly is about investing। पहले क्या होता था, आपके पास 10-15 कंपनी अच्छी है, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो। बिकॉज इतनी अच्छी कंपनी आती ही नहीं थी, इसीलिए यही 10-15 कंपनी में पैसा डाला जाता था। In last 3 to 4 years, specifically after COVID, there is a bunch of new companies and new sectors which has been in India today। So आज is HDFC is a great company? Yeah, it is a great, good company. It has done fabulous. But will it make more money than another company? Maybe tomorrow an X company will make more returns than HDFC Bank, and that's where the whole point starts to come into that alpha will be created more faster by unknown companies rather than known companies, because unknown companies are also doing segmentally very well, and that's where the next biggest trend of quant investing will be divided into two parts। The whole passive will go to ETFs। आप ETF देखो तो ETF is pure quant only। जैसे निफ्टी में अच्छी कंपनी होती है वो रहती है, बुरी कंपनी फ्लश आउट हो जाती है। द सेम थिंग हैपेंस इनटू, एंड द सेकंड हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट्स will come in quant type of investment schemes। That could be mutual funds, that could be PMS, that could be AIF, that could be any other structure। And that's where the active will be into with fund managers and passive will be with ETFs। And that's where the whole money is going to come, because over the period of time, people will understand that making money is more important than loving the stocks. And that's where the quant comes into the picture।
I'll give you a very interesting take on Nifty 500. So our research team has done a very interesting data mining that last Nifty 500 में last 20 साल में 15.6% पैसा बना है, and that is super. 15% return in Nifty 500 is crazy at index level. But the same time, if you see every 5 years, हर एक 5 साल में पूरा रोटेशन ऑफ निफ्टी 500 नियरली अबाउट 30 to 40% हो गया है। इतने सेक्टर इन आए, इतने सेक्टर बाहर हो गए। फिर इतने सेक्टर 2010-15 में प्राइवेट बैंक्स आई, एनबीएफसी आई, इंफ्रा और ओवर लिवरेज कंपनी बाहर हो गई। 2015-20 में ब्रांडेड कंजम्पशंस आए, फाइनेंशियल सर्विसेज आई, फार्मा आई, पीएसयू हैवी हाई लिवरेज कंपनी बाहर हो गई। 2020-25 में सबसे बड़ा मैसिव शिफ्ट हुआ। न्यू एज टेक कंपनी आई, स्पेशलिटी आई, हेल्थ केयर आई, रिन्यूएबल्स आई, कैपिटल मार्केट्स आई, वीक पीएसयू, लीगेसी, सिक्लिकल्स और लो ग्रोथ बिजनेस आउट हो गया। अभी मैं बोलूं कि नहीं ये 2005-10 का ही मैं तो पोर्टफोलियो रखूंगा, तो ये 15.6% जो किगर है वो 5% के किगर पे आ जाएगा, और वहां पे पैसा नहीं बनता है। लोग बहुत मुझे पूछते हैं, रोहन यार मैं तो लेके भूल जाना चाहता हूं। आप सोचो, आपका इंडेक्स लेके नहीं भूलता है तो हम कैसे लेके भूल सकते हैं? एवरी ईयर, अच्छा, निफ्टी 500 का जो चर्निंग था वो पहले इतना स्ट्रक्चरल नहीं था, वो कभी कभी होता था। लास्ट 2-3 ईयर से बहुत स्ट्रक्चरल हो गया है कि एवरी 6 मंथ्स निफ्टी 500 विल हैव इन और आउट कंपनी। सो साल में 2 बार निफ्टी 500 का चर्निंग होता है, जो मुझे लग रहा है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years ये 3 महीने में हो जाएगा। सो एवरी 5 years 50 to 100 कंपनी गेट्स churned every year. In Nifty 50, every 5 years 20 to 25% companies get churned over. So आप सोचो, निफ्टी में ही एवरी ईयर 20% का तो एवरेज चर्निंग होता है। तो आप हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो स्टॉक हमने लिया है वो इट विल ओनली डू गुड, बिकॉज सर्टन कंपनीज हैव नॉट डन बैड, but certain companies have done more better. That's the reason certain companies are getting flushed out. जैसे 2020 में मुझे कोई पूछता कि एक स्टार्टअप कंपनी निफ्टी 50 में आ सकती है, मैं ऐसा मानता ही नहीं। एंड वी सॉ जोमेटो टू बी निफ्टी 50 कंपनी, राइट? सो थिंग्स इन नेक्स्ट 10 years in India is going to change segmentally. Like you see in यूएस, यूएस में लास्ट 10 साल से सबसे ज्यादा मनी टेक में बना है। अगर वो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में निकाल देता तो निफ्ट तो S&P 500 और डाउ जोन्स और S&P 500 majorly would have done very bad. So if this is the real sense for investing, why we are expecting to only invest into companies which we love? At the end of the day, the love is more onto the profits and not the companies. And this is also a very interesting data to look forward for. In last 45 years of Sensex history, because Nifty 45 years से नहीं था, सेंसेक्स हिस्ट्री ना 46 ईयर्स, एवरेजली 1-2 साल को निकाल दो, एवरी ईयर 10% मार्केट से ज्यादा टूटा है। वो टूटा होगा फिर रिकवर हो गया, हम हाईएस्ट ड्रॉडाउन पॉइंट से ले रहे हैं। सो दिस आर ऑल कैलेंडर ईयर्स, सबसे ज्यादा वो पॉइंट पे कितना मार्केट टूटा है आप देख सकते हो। 2008 में 60% मार्केट टूटा था, 1992 में 47% मार्केट टूटा था, और 2026 में 16% का मार्केट टूट भी गया था, और देन वी हैव सीन अ रिकवरी। बट हियर आफ्टर दिस 10%, द इंटरेस्टिंग फैक्टर इज that all the sector which are leader in market changes. And that's where the biggest problem comes for a traditional side of investing. So if you see from 2010 to 2025 or calendar year to date, not a single sector has outperformed or been consistent performer for more than 1 year. आप देखोगे 2020 से फार्मा, मेटल, पीएसयू, रियल एस्टेट, फार्मा, पीएसयू, मेटल। Now, after pharma, there are times when next year pharma has been the worst or not a performer. और 2022 में मेटल्स में भी आप देखोगे तो शायद नहीं होगा, या इफ यू सी आईटी 2018 was the best performer. IT in last 2-3 years has been the worst performer. Last year 2025 PSU Bank was the highest performer. This year metal has been the highest performer. So for a human,
to pick up the right sector and a stock by their own intuition is impossible. So, what can make it more possible is only one segment, and that is data. Because data overrules anything in the world and human emotions. And that's where this is also very interesting data of performance metrics from 2010 to 26. In last 16 years, there are four type of investments process: momentum, low volatility, quality, and value. You will be surprised to know that Nifty 500 11% रिटर्न दिया है, लो वॉलेटिलिटी, क्वालिटी और वैल्यू ने बहुत कम अल्फा क्रिएट किया है, और मोमेंटम इन्वेस्टिंग ने 18% किया है. Now, momentum investing also means that you are only investing in companies which are doing better at that point of time. And that is where this point comes, is it is outperforming. सेक्टर जो आउट परफॉर्मिंग कर रहे हैं वही आप स्टॉक्स बाय कर रहे हो, और जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उसको आप एग्जिट कर रहे हो. नाउ हियर द टू पॉइंट कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इफ यू हैव एन एक्सपेक्टेंसी दैट मेरे को तो 12-15% ही रिटर्न चाहिए भाई, मेरे को तो और कुछ नहीं करना है, देन दिमाग मत लगाओ, ईटीएफ म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो और भूल जाओ. दिस वन से. बट इफ यू वांट टू हैव अ लार्जर अल्फा which could be in a range of 20-25%, that's where the quant active investing process comes into the picture. And that's where what we do at Turtle. So now I'll give you what Turtle has discovered in last 20 years, how we can pick up stocks, sectors which do more better than the markets, and we create alpha to it. So what we have done in last 20 years is that हमने बहुत लोगों का सर्वे किया, इंटरनेशनली 100 साल का मार्केट रीडिंग किया, और हमको पता चल गया कि तीनों तीन बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग के लिए. फंडामेंटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेक्निकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई बोलता है मैं तो सिर्फ टेक्निकल करता हूं, तो वो कभी कभी बुरी कंपनी में फंस जाता है. कोई बोलता है सिर्फ मैं मोमेंटम करता हूं, तो कभी कभी क्या होता है कि आप रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट में अटक जाते हो, कि आपके पास मोमेंटम है, अभी ड्रॉप हो गया, सो आपका रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट ड्रॉप हो जाता है. कोई बोलता है कि मैं सिर्फ फंडामेंटल करता हूं, तो कभी कभी एग्जिट नहीं कर पाते हैं अच्छी कंपनीज और बुरी कंपनीज में. तो हमने क्या किया, तीनों का मिक्स कर दिया, momentum, fundamental, and technical, or three together. And we created a strategy which has 5 points. And this strategy has been built up with 20 years of hard work, with all the experience, with all the market cycles back tested on every criteria. And that's where the build-up has been done. And of course, we run a PMS, so we have an experience of managing it also. We buy companies in three criteria majorly. The company should have an all-time high price. The company should have an all-time high profits TTM and quarter. Company should be outperforming Nifty 500 and its own individual sector. कंपनी जब हम लेते हैं तब we make sure that it is decided exit before we enter in a company on the downside, because upside is asymmetric. And we have a dynamic risk allocation, because allocation of risk also matters a lot, कि कितना परसेंट पोर्टफोलियो में डालना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिस्क पैरामीटर्स. सो वन, ऑल टाइम हाई प्राइस. सो वी डोंट बाय एनी कंपनीज विच इज शिट, और बहुत टूट गई है और कुछ नहीं हुआ है, सो आज भी हम गिरे हुए शेयर्स नहीं उठाते हैं. ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स इज अ क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल्स, and outperformance is a clear identification of momentum. Outperformance we see in a 52-week segment, where the outperformance is clearly matrixed. और एग्जिट क्यों? क्योंकि अगर हमने ये कंपनी ली और समथिंग गोज रॉन्ग, वी नो दैट दिस इज बीन एग्जिट पॉइंट, हमको ये निकल जाना है. और वो एग्जिट पॉइंट से डिसाइड होता है कि कब कितना हम रिस्क एलोकेट करेंगे. कोई कंपनी में हमारा 3% एलोकेशन होता है, कोई कंपनी में 4, 5, 6, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क पैरामीटर. अभी मैं ये जब बोलता हूं, तब सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझे एक आता है, रोहन आप ऑल टाइम हाई पे लेते हो कंपनी, पागल हो क्या? एंड आई विल शो यू अ डेटा टू इट. एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग डेटा our teammate Janish has made. And see what we have done is 2011 से 2024 तक
हमने पूरा रिसर्च किया कितनी कंपनी निफ्टी 750 में, विच इज द टॉप 750 इंडेक्स जो टोटल मार्केट इंडेक्स है, उसमें से कितनी कंपनी ऑल टाइम हाई हुई है ना। इसमें एक थोड़ा बायस ये है कि 2011 में द कंपोजिशन ऑफ निफ्टी टोटल मार्केट वुड बी डिफरेंट टू व्हाट टुडे इज, बट तो भी नियरली अबाउट 50% ऑफ द कंपनी सिमिलर। सो आपको आई वोंट से 100% डेटा एक्यूरेट आएगा, पर 80-90% इज एक्यूरेट डेटा। 2011 में 40% मार्केट, 40 कंपनीज बड़ी थी, जहां पे 58% ऑफ द स्टॉक क्लोज्ड एट अ पॉजिटिव, ऑल टाइम हाई हुआ, फिर वो पॉजिटिव क्लोज हुआ। उसमें से 11 ने 20% रिटर्न दिया, 8 ने 20 से 50% दिया, 3 ने 50 to 100% रिटर्न दिया, और एक ने 100% से ज्यादा रिटर्न दिया। हमने हर एक साल का एक रिसर्च किया, 2012, 2014, 2015, 2016। आई गो मोर टू आफ्टर 2020। सो 2020 में 117% कंपनी ने ऑल टाइम हाई किया, उसमें से 85 कंपनी क्लोज पॉजिटिव। 2021 में 63% क्लोज पॉजिटिव, उसमें से 63 219 में से 16 कंपनी 100% के ऊपर आया। और 2024 में 308 कंपनी डिड एन ऑल टाइम हाई, 44% कंपनी वेर पॉजिटिव, एंड 10 only made it to all time high, sorry, 100% and more. And if you see, every year this data is inching up higher and higher. The worst year of all time high was 2018, and the best year was 2023. Now you will say, Rohan, this data is okay, ये तो सिर्फ ऑल टाइम हाई का डेटा डाला है। फिर हम डालते हैं ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स, फिर हम डालते हैं ऑल टाइम हाई आउट परफॉर्मेंस एंड सेक्टर आउट परफॉर्मेंस। जो ये 44% का डेटा है, we take this data to 45-70%, sorry, 70 to 80%, and that's where we come to the point that it's not only all time high that matters, it all time high profits and momentum, all these three factor comes। हमारे एक्सपीरियंस में 70% of the companies what we buy close at positive angle, and nearly about 30% companies are more than 100% and above, and that's where the alpha is created। आप सोचो, अगर मैंने ये डेटा स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक से डाला होता, सो 2020 में जो ऑल टाइम हाई कंपनी हुई थी और 2024 में जो ऑल टाइम हाई कंपनी हुई थी, दैट वुड बी टोटली डिफरेंट कंपनीज। एंड और ऑल टाइम हाई क्यों है? बिकॉज ऑल टाइम हाई प्राइस, प्रॉफिट्स और आउट परफॉर्मेंस होना वो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये तीनों कंपनी आए और आपका लोवेस्ट मार्केट कैप 5,000 करोड़ है और हाईएस्ट मार्केट कैप द टॉप कंपनी है, तो आप कोई जंक कंपनी भी नहीं ले रहे हो। सो दैट्स वेयर द अल्फा इज क्रिएटेड इन द मार्केट, राइट? एंड दैट्स वेयर द पिकिंग कम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आई गिव यू एन एग्जांपल। When Paytm was 1200 rupees, I was very, very clear that yeah, Paytm बहुत बड़ी कंपनी होगी, and I wanted to pick, but I could not pick because it's the process driven organization, right? So आप ले ही नहीं सकते because profit all time high पे नहीं था, price नहीं था और आप performance नहीं था, and that then Paytm came to 300-400 rupees, and then Paytm again lifted up to 1200 rupees, but from 1200 to 300, that drawdown is very painful for somebody to see, and that's where this process comes into the picture। And amazing बात क्या है, ये पूरा प्रोसेस इतना ओपन है कि हमने उसका एग्जिट मंत्रा बना दिया है, आप उसमें जाके भी देख सकते हो। पर दैट्स वेयर आवर पॉइंट इज द डिसिप्लिन विच कम्स इनटू द पिक्चर। So what we do, guys, over here is that we have made three segments, and you can also do at your end। Add super performers, जो तीनों तीन क्राइटेरिया में है, प्राइस, प्रॉफिट्स एंड आउट परफॉर्मेंस, उसको हम ऐड करते हैं। सेक्टर का भी आउट परफॉर्मेंस, इसमें से तीनों में से जो कोई तीन हो जाते हैं उसको तो पैसा देते हैं। हम दो तीन में से एक माइनस हो जाता है, बिकॉज एवरी स्टॉक विल नॉट बी कंसिस्टेंट फॉर 3 इयर्स, 3 थिंग्स। कभी कभी एक ड्रॉप हो जाता है, कोई क्वार्टर का नंबर खराब आ गया, कभी आउट परफॉर्मेंस थोड़ा डिप हो गया, कभी प्राइस थोड़ा बेंड डाउन हो गया, पर वी विल नॉट एग्जिट वेरी फास्ट। सो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि आप आपका चर्निंग बहुत हाई होगा। नहीं नहीं नहीं, हमारा एवरेज होल्डिंग पीरियड इज फ्रॉम 1 to 2 years, 2 years का एवरेज होल्डिंग पीरियड है। इतना फर्स्ट चर्निंग नहीं होता है हमारे पोर्टफोलियो में ऑन द कॉन साइड होल्ड। और इसमें से दो में से कोई भी वन और जीरो में आ गए रैंक में, तो हम उसको निकाल देते हैं। हमारा एंडेवर है कि 80% ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी बिटवीन सुपर परफॉर्मर एंड परफॉर्मर।
If we have the performer and super performer 80%, there is 99% of the probability that our portfolio will be having higher alpha, period. इसमें हमने और ऐड किया, और दिस इज समथिंग विच वी हैव डन रिसेंटली। मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस, और being a fund manager, SEBI fund manager for 5 years and managing fund from last 10 years in different aspect, मेरी बिगेस्ट मिस्टेक नहीं बोल सकता हूं, बिगेस्ट मिस ये था कि मैं हमेशा जो मेरा परफॉर्मर है उसको ही मैं बहुत ज्यादा देखता था, मेरा अंडर परफॉर्मर को मैं कम देखता था। इसीलिए हमने लास्ट इंसेप्शन से इतना बड़ा अल्फा नहीं बनाया है, पर लास्ट 2 साल से हमने एक्सेप्शनल, 3 साल से एक्सेप्शनल अल्फा बनाना चालू कर दिया है। हमने क्या करते थे कि अच्छा स्टॉक ए है तो वो कर रहा है अच्छा, तो हम बहुत खुश थे। पर बहुत एरिया ये होते हैं कि स्टॉक लीक करते हैं, पोर्टफोलियो लीक यानी अंडर परफॉर्मेंस करते हैं। हम हमारे इंटरनल एक्रूअल के लिए क्या करते हैं, एवरी वीक फॉर मंथ डेटा वी सिट एवरी वीक कि हमारा करंट पोर्टफोलियो क्या कर रहा है। जैसे ये स्टॉक है जो सुपर परफॉर्मर कैटेगरी में है। सो स्टॉक ए है, उसका एलोकेशन 8% है, 13% रिटर्न है, तो मेरा 1.13% का अल्फा क्रिएट हुआ। हम अभी तक क्या देखते थे, हम सिर्फ स्टॉक को रिटर्न्स के मामले में देखते थे, अल्फा के मामले में नहीं देखते थे। अभी नाउ वी हैव स्टार्टेड सीइंग फ्रॉम लास्ट वेरी वेरी सेगमेंटली फ्रॉम लास्ट 1 ईयर व्हाट इज द अल्फा विच इज बीन क्रिएटेड। जैसे स्टॉक बी 7% बढ़ा, 7% एलोकेशन है, -2 है, अल्फा मेरा 0.17 है। मेरे सुपर परफॉर्मर ने कितना अल्फा दिया, तो कि भाई +3%। ओके, वेरी गुड, सुपर। पर कोई स्टॉक है जो जो नेगेटिव अल्फा दे रहा है, पर 3 कैटेगरी में है, ऑल टाइम हाई प्राइस, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स, और ऑल टाइम हाई आउट परफॉर्मेंस। आउट परफॉर्मेंस है, उसको कुछ नहीं करना है, आई एम जस्ट रिव्यूइंग कि वो कितना अल्फा क्रिएट कर रहा है। फिर परफॉर्मर पे जाते हैं। ये स्टॉक ऐसे हैं जो 2 सेगमेंट पे है, 3 में से उसका एक नेगेटिव है, उसको भी देखते हैं कि क्या अल्फा क्रिएट हो रहा है, तो उसका 0.92 अल्फा, ठीक है। एंड आई सी कंपनीज विच आर इनटू नेगेटिव, कि इसका एलोकेशन भी है, अंडर परफॉर्मर है, अभी तक है पोर्टफोलियो में, बिकॉज उसका कहीं एग्जिट नहीं आया या ट्रिमिंग नहीं हुआ है, तो उसमें मुझे कितना अल्फा नेगेटिव करना है। और कैश को भी हम इन्वेंट कर देते हैं कि कैश को भी 6.5% है, अगर मार्केट नेगेटिव गई है तो कैश का पॉजिटिव अल्फा हुआ, और पॉजिटिव गई है तो कैश का नेगेटिव अल्फा हुआ। ये पूरे सेगमेंट में मेरे कौन से स्टॉक ने हायर अल्फा क्रिएट किया है, नेगेटिव अल्फा की क्रिएट किया है, और ओवरऑल अल्फा कितना है। बिकॉज हम सब रिटर्न के चंगुल में फंस जाते हैं कि यार मैंने तो ये स्टॉक लिया था। आई गिव यू एन एग्जांपल, वी बॉट एमएनएम, I think so 5 to 6% in 2022 at 800, 900 rupees. Stock went to 3600 rupees. Fantastic, right? You will say, Ron, you're a killer in Nifty 50 stocks. Superb. Today we have 0% allocation in M&M. Is it a bad stock? No, it's a fantastic company. But it has been segmentally from last 6 months, has been into 1 and 0 criteria, and the alpha is coming negative. So now I will start to find out M&M छोड़ के the more better opportunity which can create alpha to it. Now how you find more better opportunity? Again, companies which are doing all-time high profit, all-time high price, and all-time high outperformance. और हर दिन कोई कंपनी बेटर कर रही है, हम नहीं देख रहे पर कुछ ना कुछ बेटर हो रहा है। और दैट इज वेयर द रीजन इज दैट कि इतनी सारी कंपनीज जो बड़ी कंपनीज है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस, एचडीएफसी, एशियन पेंट्स, Pidilites, these are great companies, but where the investment have been shifting from that companies to a higher alpha making companies, and after that we give an allocation कि स्टॉक में अगर एग्जिट होगा, अगर डाउनसाइड, इफ द स्टॉक हिट्स एन एग्जिट पॉइंट, my portfolio should not lose more than 1.2% in the portfolio, 1.2% in the invested value. We decide exit before we enter the downside. No model portfolio allocation. Every client gets a new allocation percentage when they are investing, not the model portfolio. Because
मॉडल पोर्टफोलियो इज द एनिमी ऑफ क्वांट इन्वेस्टिंग। क्योंकि मॉडल पोर्टफोलियो आप कर लेते हो तो शायद आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ एमएनएम ओनली। एमएनएम वी bought it at 800, or rather I'll give an example of silver. Silver, we were a very initial buyer of silver at 80 rupees at the time of again the same strategy. Now silver from 80 rupees went to 300 rupees plus in ETF price. Our 6 to 10% allocation went to 20-25% allocation. If the money would have come in last 6-8 months, silver would have been a negative alpha to it, right? So नए clients में silver अलग allocation से buy किया जाता है और पुराने में अलग. And this is the biggest understanding that if you are doing a model portfolio approach and quant investing, it is the biggest mismatch to each other. Because अगर मैंने M&M 3600 पे नया client में लिया होता, that client would have done loss, but my old client would have done really decent profits. And that's where we create a very different thought process to a normal investing process. And reallocation is pure based on the quant process. So हम अच्छी कंपनी को ज्यादा पैसा देते हैं. We have a company called Acuitas. Acuitas हैज डन सुपीरियर, और हमने हर एक लेवल पे उसको ज्यादा पैसा दिया, राइट? सो दिस इज हाउ द रिस्क मैनेजमेंट वर्क्स, दैट्स ओके. सो दिस इज वेयर द अल्फा क्रिएशन हैपेंस. दिस इज रिव्यूड एवरी वीक, and this has been reviewed and shared that these are the companies which is creating alpha and these are the company which is not creating alpha. 511 PMSs in India. I can bet anybody would be seeing so micro needling on alpha creation, and that's where the whole process comes. Also, our investing principles has not been only related to quant, but this is what we have understood, that this works and it doesn't work. We have no minimum holding bias के नहीं नहीं मैं तो 5 साल होल्ड करूंगा, जब तक कंपनी परफॉर्म करेगी तब तक होल्ड करेंगे, नहीं करेंगे एग्जिट कर देंगे. नो इन्वेस्टिंग इन सिन बिजनेसेस विच आई ऑलरेडी टोल्ड. नो सेक्टर बायस. बहुत लोग बोलते हैं कि इतना तो डालना है, इतना तो नहीं डालना है, इतना तो इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना है. कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज समटाइम्स आई टेल यू, certain sectors have not been performer for so many years, and if you have been into that sector, you alpha would have not been there. No market cap bias. The only thing what we do is that we only invest in Nifty 750 companies, top 750, because हमको वैसे भी 15 कंपनी एक फंड में चाहिए, तो इतना है नहीं, इतनी मिलती नहीं है. एंड 5,000 करोड़ के बाद की कंपनी में प्रमोटर भी बहुत सुलझे हुए हो गए हैं. उसने गाड़ी बना ली, प्राइवेट जेट ले लिया, लेना है तो बंगला बना दिया, सब कुछ कर दिया. Now their only priority comes to do growth in the organization. So हैंकी पैंकी थोड़ा कम होता है, rather very low होता है. No model portfolio bias which I already told. No averaging loser, नीचे गया थोड़ा और बार करो, कुछ नहीं ऐसा. Rather we do the inverse. We will buy more when the company is doing more better. No premature profit booking कि चलो चलो थोड़ा बढ़ गया है, मैं थोड़ा 20% बुक कर लेता हूँ. Nothing. It purely goes on to the process. No falling in love with stock. नहीं मैंने तो बोला है, ईगो ऑफ फंड मैनेजर के, मैंने तो ये स्टॉक बोला है, मैं तो कभी बेचूंगा ही नहीं. नो, इफ इट इज नॉट परफॉर्मिंग, यू हैव टू सेल. नो एंट्री बिफोर, पहले एग्जिट डिसाइड करो फिर एंटर करो. एंड नो कॉम्प्लेक्स फी स्ट्रक्चर. दिस इज व्हाट वी हैव डन एट टर्टल. I'll give you certain examples which we have been an investor for, and this is more on to education purpose. Please don't take it as an investment advice. So GPIL was the very initial point. We invested as a very micro cap, and then GPIL went 9x, 653% alpha to the portfolio. Still we hold. It's now more than 10x. 8.5 is an average of it, but more than 10x in a lot of portfolios. Godavari Power Ispat Limited, still it is at 20,000 crore, right? 25,000 crore of market cap. It's a Raipur company, again pure alpha. BLS International, we exited TCS and bought BLS International, and nearly about 135% alpha. This is exited company. We are also writing exit companies, right? Because जो company हमने निकाल दिया. Silver ETF, a great story. I think so one of the most interesting pick we have done, or most odd pick we have done. हमने 2024-25 में रिपोर्ट निकाला था कि सिल्वर इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट थीम ऑफ नेक्स्ट डिकेड. 80 रुपीज, that is 80,000 पे हमने we invested, and we did ETFs because PMS cannot do derivative investments, sorry, commodity investments. And look at what happened. It is 174% drop के बाद
alpha to what we have invested in. Nifty 500 had been zero to that time. Again, huge industrial demand, core application, stock was at all-time high. 10 साल का ब्रेकआउट था, nobody was interested in silver. When we bought silver, we lost clients, कि क्लाइंट ने बोला ये पागल है क्या, सिल्वर कौन लेता है, and that is where the alpha is created. So silver is still holding our portfolio. TVS Motor was a very, very unconventional investment bet we did. When we invested, it was a small mid cap. When we exited, it was a large cap. And look at what it has done. So when we bought TVS, Bajaj Auto, Hero, Eicher, they were the leaders. And बहुत लोग बोलेंगे कि आपकी आपकी ये होगी, आपने रिसर्च किया होगा, नहीं नहीं, इट्स प्योरली क्वांट वेयर वी बॉट टीवीएस. It was the first stock to do all-time high in two-wheelers. And TVS Motor did 246% alpha to our portfolio. And that's where we like it, right? Because बहुत लोग सोचते हैं 3.25x. But 3.25x is good. But agar the same time Nifty 500 would have given 4.5x return, there was no fun to 3.25x. And that's where the alpha is 246% is created. And you see TVS Motor is red. All the stocks where means till Nifty CMX Auto also, how it has outperformed the markets. And that's where the alpha creates. We have exited TVS Motor. Of course, it has started to underperform the market. So no love to it. Great company, amazing management, beautiful EV products, but we have to shift, right? Nava, again, bought at a very small market cap, 135% alpha. Between it was not a great alpha, then it started to do amazing. So 135% alpha over, over investment. I think the alpha would be more higher if you include a lot of dividends and a lot of point we bought it, but this is an average of what we have done. But yeah, this is certain examples of what we have done. There are so many examples. Recently, we got a company called Power India. Now, Power India is 250x of P we bought, right? And today is at still 150x. Power India has been the best performer stock in one of our portfolio. Then we bought a company called TD Power System, again 90x of valuation. And I'll tell you the myth, the beautification about quant investing is that was India में with 20 years of my experience, I'll say PE doesn't work. So कोई भी आपको PE का स्टोरी चिपकाता है ना, आप सुनना ही मत. Because इंडिया में good management, good product and services which are in demand, and आउटपरफॉर्मिंग प्रॉफिटेबिलिटी, ये तीनों बहुत रेयर है कॉम्बिनेशन. और अगर ये तीनों मिलता है तो चीप मिलना इम्पॉसिबल है. हाँ, आप बहुत अर्ली प्रेडिक्टर होंगे तो आपको शायद आपको मिल सकता है, पर वो उसमें लक फैक्टर बहुत बड़ा काउंट करता है. पर सो आई गिव एन एग्जांपल. वी बॉट पावर इंडिया एट मे बी 15,000 rupees. Today is 38,000 rupees price. Nothing has changed. We still holding, we're buying more to it, because if you see the return segment, it has been consistently higher and higher over the period of time. And that's where the investment process come. If a normal person को 15-16 हजार का स्टॉक with 250 times of P बोला जाता लेने के लिए, a normal person would have said पागल है क्या, नहीं लेना चाहिए. And that's where the quant comes into the picture. It says that let me check out everything. Let me focus on three probabilities. Is it outperforming? It is doing a superior, higher profitability, and is the stock at all-time high? Then it makes a lot of sense. And I'll put out on product and services just to give, because both questions hote hai. We do PMS, which is a registered portfolio managing more than 1,000 crores. We do PMS advisory for family offices. अगर आपको 5 करोड़ के ऊपर का portfolio है, you want to do it at your end, we do it over here. Family office, we do it. We are very, very superior at family office, and we have a tech model called Exit Mantra. अब ये पूरी बात किया है, आपको कुछ नहीं करना है, आप एग्जिट मंत्रा के पास जाओ, डेटा उसका ऐप डाउनलोड करो, आप कुछ मत करो, स्टॉक आप लो तो उस पर एक बार देख लो, एंड देन यू कैन गो. इट्स मोर इजियर एंड इट विल गिव यू मोर बेटर डेटा. वी ओनली वर्क एज बीएमएस जब आपको आपको कोई प्रोफेशनल चाहिए. बाकी एग्जिट मंत्र ओपन सोर्स कर दिया है हमने. I'll give you what we have done in last 1 year in all our schemes. So we have 3 schemes. Wealth Mantra is our bespoke, is our portfolio where we only invest in leaders. Market was 3.64% in last 1 year. We had been 25%, roughly around 25%. This is pre
टैक्स बाकी सब कुछ कॉस्ट आ गया है. Profit mantra is 3.64%, where we invest in emerging companies which are mixed to small cap and mid cap. This is mixed to large cap and mid cap. And that's the whole universe are still same. We can buy small cap over here also, and we can buy large cap over also here, but it should be emerging as the theme, 32%. And profit mantra is our family office bespoke investment, where we had been 25%. So this all possibility in last 1 year is possible only because of the quant investing process, nothing else. We have very unique fee structure also. Fixed fund management fees 2%. कुछ नहीं करना हो तो honestly the cheapest. Performance fees, no fees, 8% hurdle, 20% profit sharing. Hybrid 1%, 10%, 10%. And these are all on the website. You can see I'm not going to talk more on the fees. This has been our performance. You can see the mix of it. 3 years has been 14% to 27%, and since inception 11% to 20%. But 3 years are the right metrics to see rather than the previous one, 14% to 27%. And with our better understanding in last 1 year, we will say that this alpha would be much higher in next 3 years over the period of time. We have a lot of value-added services also, investing masterclass, quarterly review, dedicated relationship manager, extremely clear process of investing. We put it into WhatsApp communities only for investor, anytime access to portfolio, top up anytime and exit also anytime, no string attached. So what we aspire for is 10 years, we want to be at 25% of, 25% of return. So somewhere around 10x of value in next 10 years. This is what we aspire for our investing process. Larger than that, but after tax, everything, we aspire that 10x should be after 10 years of your investments. And this all will only be possible now in India if you have a process where the decisions are from not from heart but from brain, from data. तो ये एक बहुत important है. We do investor entry report, exit report. We have investor portfolio review report. So this is what we do. I'll share maybe one of the report to show you how we. It's presentation, I think, so we can only do in PDF, but you can go and get into our presentation where we have a very unique point or how returns have been there. Most of our investment portfolios have been an alpha of more than 70 to 80% higher. We have exit mantra where you can download app, you can go forward for seed. We have now 5,000 crore of portfolio review into that, and we are doing this dent in the investing universe where people will take decisions from data, not from heart. We have a lot of podcast also to you go to talk on it to see that what are the thought process behind the quant investing, and that's what we do. I'll share you a story and then we'll go for question and answer. This story is very beautiful and very near to me. So way back in 1000 BCE, there were two gentlemen, two big tribes. One was Palestine and one was Israel. अभी भी fight हो रही है. Palestine had this huge guy called Goliath. And Goliath was this 8 foot tall, muscular, means कोई उसके सामने टिक ही नहीं सकता था. And this Israel came out and told that, I have this small guy who wants to fight and called David. David was 5.2, 5.3, not muscular at all, a very thin, lean guy. And how he could win against Palestine, who is this 8 foot tall Goliath. And Malcolm Gladwell wrote an amazing book that how small organizations are beating big organization with David and Goliath thought process. So David was shepherd. तो शेफर्ड का काम था, ही वॉज वेरी गुड एट स्लिंग शॉट, बिकॉज उसको वुल्फ को मारना था. अगर वुल्फ आया तो उसकी बकरियां खा जाएगा, है ना. तो वो इतना शार्प था कि फास्टेस्ट एट 100 किलोमीटर ऑफ वुल्फ इज रनिंग एंड हिज स्लिंग शॉट विल बी देयर एंड ही वुड बी किलिंग अ वुल्फ और हिटिंग अ वुल्फ. So David didn't pick up armor and a sword. David picked up his slingshot. He took a slingshot. The great Goliath was overconfident that nobody can beat him.
David took a slingshot, took the aim on his head, and वो तो उसका head was very clear to him. If he can kill 100-kilometer fast runner wolf, David was a normal thing for him, and David collapsed. And that's what we are doing in investment. We are David right now. We are not Goliath. But because our slingshot is our quant investing process. And that's where we are going to be one of the biggest organization who is going to change the facet of investing. And we want to invite you, all of them, not being only by our clients, but giving that thought process into your portfolio that data should be the decision making process rather than emotions and heart. And that's where we come as turtle and exit mantra into your life. So if anywhere we can really contribute on your wealth creation journey, we would be the most happiest to do. Just on a disclaimer point, जो भी डिस्कस किया है इट्स मोर फॉर इंफॉर्मेशन बेस. आप जितना भी डिसीजन लेना चाहो आपके वेल्थ मैनेजर या आपके फाइनेंशियल मैनेजर के साथ लेना. So this is what we do, guys. I've given you a very simple point of how it has been done. So मैं और डिटेल एक घंटा ले सकता था, but I thought that let me keep it crisp. I'll take more questions to give you an understanding on how it works. But yeah, next 10 years wealth creation journey is from Quant, not from buy and hold and forget. Thank you. Kirti, we can have some questions if there are. Vishal Um, Patel, you can speak if you want, and if we have any question and answers. we have one question from Pankaj. If we invest today, how do we protect ourselves from drawdown or market crash by quant investing method? So, Pankaj, if we invest today, the point is that first of all, we are investing only into focus-driven process. So, it can have drawdowns for sure, but the probability of getting drawdown. So, again, going back to the slide, which I always tell people that every year market will drop to average of 10%. So, ये drawdown तो आपको expect करना ही है कि कभी भी आ सकता है. But if we are investing into companies which are more growth driven, the drawdown probability is lesser. So I'll give you an example that IT had been the biggest drawdown in last 1 year. IT has been minus 25%. We don't have any IT in our portfolio. So if everything goes wrong and market drops, ये भी टूटेगा ही. पर जब रिकवरी होगी तो आपके स्टॉक पोर्टफोलियो चेंज हो जाएंगे, वहां पे क्वांट विल मेक अ लार्जर पिक्चर. सो ड्रॉडाउन्स एक तो 3 पॉइंट से बच सकते. एक, यू आर बाइंग ओनली ग्रोथ. सेकंड, यू नो दैट व्हाट इज द टाइम एग्जिट स्टॉक में हो जाना है. थर्ड, दैट ड्रॉडाउन को क्लियर करने के लिए यू नीड बेटर आउट परफॉर्मर्स. दैट्स वेयर वी कैन बाय नेक्स्ट न्यू विनर्स व्हेन द मार्केट इज रिवॉल्विंग. सो you will not be saved by drawdowns, but yes, you can be protected by drawdowns. Yeah, of course, Vishal, I can unmute you. Just give me a second. Vishal, you can talk. You can go ahead. हेलो। Yeah, Vishal. या रोहन भाई, एक मेरा क्वेश्चन है कि जो ईटीएफ वाला जो सिस्टम में एग्जिट मंत्र जो प्लेटफॉर्म है, राइट, उसमें कब तक आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन ये है। मीन्स ईटीएफ का जो मीन्स स्टॉक का तो बढ़िया आपका सपोर्ट मिलता है, वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला ही है। अभी तो है ऑलरेडी, बट मीन्स बहुत मीन्स ईटीएफ वाला है Yeah, yeah, yeah. वो। So, Vishal, we are working on ETF. हम्म। My probability is that in next 1 or 2 months, the systems are getting on the ETF. ETF में problem क्या है? There are a lot of ETFs which are too illiquid, and there are a lot of ETFs are onto the debt side and liquid side. सो ये कंट्रीब्यूशन करना वो थोड़ा मेहनत हो रहा है, पर आई थिंक सो इन 1 or 2 months, इन 60 days वी शुड बी क्लिकिंग ETFs ऑन द प्लेटफॉर्म. राइट राइट। बट फॉर द टाइम बिंग, जस्ट तब तक ETF नहीं है. आप है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मेटल का ETF है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? राइट तो आप है ना निफ्टी मेटल तो देख ही लो, राइट राइट। है ना? तो वो एक एक आपको वो इंडिकेशन तो मिल जाएगा. जो उसका जो स्पेसिफिक ETF है, जो मॉडल टू मॉडल ETF चल रहा है, तो उसको आपको क्लियर वर्जन मिल जाएगा कि ETF में इन्वेस्ट ये सेगमेंट में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. बट या, वी आर राइट कमिंग वेरी फास्ट विद ETF. राइट नाउ तो मैं ईटीएफ आपका प्लेटफॉर्म का जो सुपर परफॉर्मेंस सेक्टर जो होता है, राइट, उसका हेल्प से ईटीएफ परचेज करता हूँ।
राइट, वो एक हेल्प करता है वो प्लेटफॉर्म से। और सेकंड एक स्टॉक स्पेसिफिक पूछना चाहूंगा, बिकॉज ऑफ जो एग्जिट मंत्र है, राइट, उसमें मैं स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा था, राइट। वो एपोलो माइक्रो करके एक स्टॉक था, राइट। उसमें क्या था कि जो एग्जिट बार बार चेंज हो रहा था आपके प्लेटफॉर्म पे, एग्जिट मंत्र वाला प्लेटफॉर्म पे, और मैं बार बार मिस एग्जिट हो रहा था, अदर होल्ड हो रहा था, वैसे मिस फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा था। जब प्राइस 210 के। हाँ, तो वो मैं आपको समझाता हूँ क्या होता होगा। जब ओके, बहुत स्टॉक ऊपर नीचे आउट परफॉर्मेंस में चला जाता है तो ए- वो ऐड नहीं देता होगा आपको, वो रिप्लेस से होल्ड या होल्ड से एग्जिट पे आ जाता होगा। ओके, ओके, राइट, तो राइट। ऐड नहीं देता होगा, सो आप एक बार एड एग्जिट कर में लो। था, ऑलरेडी एड में था, हम्म। राइट। और आपने जैनम प्लेटफॉर्म पे भी मैंने आपका जो पॉडकास्ट मीन्स वो प्लेटफॉर्म हम्म। पे लॉन्च हुआ था, वो टाइम पे मैंने वो लिसन किया था। आप जो 200 डे मूविंग एवरेज जो है वहां पे उसके नीचे आ जाता है तो आप एग्जिट कर देते हो, राइट, हम्म। वैसा बोला था जैनम प्लेटफॉर्म पे, राइट। तो मैं उसके बाद मैंने ट्रैक किया कि हाँ वो सिमिलर यहाँ पे मिस 20 मूविंग एवरेज मिस आपका जो प्लेटफॉर्म है एग्जिट मंत्र वाला, वो वहां पे एग्जिट मिस होल्ड में जाता था, एड में था, होल्ड में जाता था हाँ, वो बाद होगा में। ना। हाँ, बिकॉज हाँ। कोई भी क्राइटेरिया थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो आप जब तक होल्ड है तब तक होल्ड रखो, वो रिप्लेस आया तभी आप फिर नई अपॉर्चुनिटी लो। ओके, ओके। है ना? रिप्लेस थैंक हो तब मेरे को वो स्टॉक यस, को एग्जिट करना है। यस, यस। राइट, राइट, राइट। परफेक्ट, थैंक यू विशाल। और एक मैन्युअली या क्वेश्चन है कि जो एड में जो मीन्स मैंने वही स्टॉक को फिर से आपने 239 और 232 के अप्रोक्स फिर से ऐड किया, राइट। वो टाइम पे मैंने चार्ट पे ऑब्जर्व किया, फिर से वो 200 मूविंग एवरेज का ऊपर क्लोजिंग किया, तो उसमें एड में एंट्री हो गया, वैसा मैंने ऑब्जर्वेशन किया है। वैसे ही जैसे एक जयक्रॉप करके वो उसको ऐड में विशाल, डाला। विशाल, वी विल नॉट टेक स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, क्वेश्चन नहीं, बिकॉज नहीं, वो हाँ। वो दो इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, मेरा क्राइटेरिया जो एड में आ रहा है, राइट। तो वो जय क्रॉप है, वो उसका जो तीनों अभी ग्रीन हुआ है कि प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई है, मोमेंटम भी ऑल टाइम है, और सब तीन है और एड में आ गया है, राइट। बट अभी एज ए मैन्युअली मैं चेक करता हूँ तो उसका जो प्रॉफिट भी ऑल टाइम नहीं है। और नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, प्रॉफिट ऑल टाइम ना हो। मैं ये ऐसा हो ये ही। स्टॉक को मैं अप्रोक्स आप एक 2016 काम से। करो। ओके, आपका ईमेल एड्रेस डाल दो। आवर टीम विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। ओके, ओके, या। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। उमंग भाई, इफ यू हैव अ क्वेश्चन। Umang has already typed the question. ओके, रोहन भाई। क्वेश्चन। So he is an Umang bhai, are you asking? हाँ, वो बेटर रहेगा आई थिंक वो हाँ, ठीक है, ठीक Yeah, है, फ्रेश। yeah. गो Please, अहेड। please go ahead. Please सो go ahead. आई एम एन एग्जिटिंग विद डिजाइन। So, Umang bhai, I think so already we have discussed, we will only invest into companies more designated on the new opportunities, not onto the old opportunities. आपने देखा होगा लास्ट एक महीने में हमने बहुत सारा चीज ट्रिमिंग किया just because of the new opportunities into it. Anything else you have question onto this? If I हाँ, want to, हाँ, हाँ। हाँ। एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज 1 CR का मेरा पुराना पीएमएस पोर्टफोलियो था। नाउ हम्म। इफ आई डिसाइड कि मेरे को अब 2 CR करना है, एक एग्जांपल। हम्म। हम्म। तो अब यहाँ से कोई भी जो फ्रेश आपके रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट कॉल आएगी, उसका रेशियो अब 2 CR के हिसाब से इन्वेस्टमेंट लेगा, या ऑल टुगेदर नया पोर्टफोलियो, मतलब 1 CR का एक नहीं, नहीं, नया नहीं, अपने पोर्टफोलियो बन जाएगा। अपने को अभी 2 CR के हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने का, जो नई अपॉर्चुनिटी आएगी। तो पुराने जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, मान लीजिए 15 स्टॉक्स हैं सपोज, तो उसका एलोकेशन कैसे एडजस्ट होएगा 1 और 2 CR के हिसाब से? हाँ, तो वो जैसे फिर से वो रीबाइंग में आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि उसमें करना है। गिव यू एन एग्जांपल, लेट अस से यू बॉट पावर इंडिया एट हम्म। 15-16 के, राइट? हम्म। जब उसका फ्रेश नया इन्वेस्टमेंट आएगा, नया ब्रेकआउट आएगा,
तब आपको उसमें फिर बोला बोला जाएगा कि इफ यू डोंट हैव यू कैन री इन्वेस्ट इनटू इट। सो तब आपके पास अगर नया एलोकेशन है वो, जैसे समझो कि तब आपका 4% के हिसाब से 6% हो गया, तो 6% आपका नहीं है वो फ्रेश फंड को गिन के, तब आप कैन यू कैन री इन्वेस्ट इनटू इट। तो अब फिर नए तरीके से 6% ऑफ 2 CR मतलब हाँ 12 lakhs हाँ फिर हाँ, वो जितना फिर परसेंटेज हिसाब से ही आएगा, बिकॉज परसेंटेज कुड बी वेरी, अमाउंट कुड बी वेरी एवरी ईयर ऑल्सो। ओके, तो ये आई विल हैव टू इन्फॉर्म एक कट ऑफ डेट कि यहाँ से अब आई एम हाँ, प्लानिंग। वो आपको मुझे ग्रुप में आप डाल दीजिए, वी विल टेक अच्छा केयर ऑफ इट। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैंने टाइप नहीं किया था। कुछ एज ऑफ नाउ तो सर देखिए, ग्लोबल ईटीएफ्स बहुत लिमिटेड हैं और बहुत लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट का। हम्म। सिमिलर टाइप से जैसे आपने ये ईयर वाइज सेक्टोरल चार्ट दिखाया, अभी मान लीजिए 1.5 साल से ताइवान चल रहा है, जापान चल रहा है, तो ऐसी भी कोई स्टडी की है आपने क्रॉस बाउंड्री मार्केट्स पे कि भाई टॉप 5 मार्केट्स में ही अपन इन्वेस्ट करके उसको चर्न करके और टॉप परफॉर्मिंग मार्केट्स में ही रहेंगे, क्योंकि कभी भी आगे जाके जब ऐसा ऑप्शंस खुलते हैं इंडिया में तो अपने पास ऐसी स्टडी होने से अच्छा रहेगा जी। Yeah, you are very right that, like Korea has done specifically amazing, right? हम्म। Nasdaq is doing fantastic. Means जिसने इशू क्रिएट किया वॉर का, वो रोज ऑल टाइम हाई कर रहा है, आप यस। समझो। तो वो तो बहुत सरप्राइजिंग है। पर इसमें क्या है, बिकॉज ऑफ इन इंडिया द पॉइंट कम्स विद अ लॉट ऑफ लिमिटेशन ऑन इन्वेस्टिंग एक्सेप्ट यूएस मार्केट्स, फिर आपका वो टैक्सेशन स्ट्रक्चर ये वो। So I think so this only comes into the picture where you are not finding any opportunities in India, which I find कि अभी भी opportunities are very high in India. But yeah, we are still not being very keen on countries investment rather than sector investment. So I don't have a right point to say, but अभी भी मुझे ऐसा लगता है इंडिया में 24% 25% केगर करना बहुत इजी है। सॉरी, पॉसिबल है, इजी नहीं बोल सकता हूँ। And this also comes, Umang, by when you have a portfolio of now more than 200 300 crores, तो वहां पे 20-30% एलोकेशन करना कोई मतलब करता है? दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। और विद इन इंडिया सेक्टर स्पेसिफिक, हालांकि आपने पार्टली वो क्वेरी आंसर कर दी थी, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक भी पॉसिबल है कि सेक्टर्स को उठाया जाए, बिकॉज सारे तो ईटीएफ्स भी अवेलेबल नहीं है उतना नहीं, पर लिक्विडिटी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता है हर एक ईटीएफ अवेलेबल हो जाएगा। मैं जितने भी ईटीएफ कंपनी के साथ बात कर रहा हूँ, एवरीबडी इज वर्किंग ऑन इट, सो मे बी इन उसका 1 or मॉडल बना रहे हैं आप फिर? हाँ हाँ हाँ, सो वी आर वर्किंग एंड हार्दिक, वी एंड हार्दिक आर रियली वर्किंग रिलेंटलेस ऑन इट, दैट हम पूरा एक प्रोडक्ट ही ला रहे हैं सिर्फ ईटीएफ का। So only investing into sectors, but still we have not got the final point to it. So we have not communicated. Once it will be done, I think so in this quarter, 1 or 2 months, we would be launching also. हाँ, बिकॉज पर्सनली स्पीकिंग द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस सेक्ट इंडेक्स और मे बी अ कंट्री इंडेक्स, उसके ऊपर है ना, बड़ा पैसा लगाने का एक इजी माइंडसेट अलाउ करता है रादर देन स्टॉक स्पेसिफिक पे। No, आई but डोंट नो, इट माइट बी yeah, साइकोलॉजिकल। you're right, very right. This calendar year, we would be doing it in a very sizable portfolio. Don't worry. चलिए, ग्रेट, दैट Yeah. आंसर्स माय क्वेश्चंस, थैंक यू। Thank you, boss. There is one last question from Swapnil. Could you please Mhm. throw some light on super performer with crown and super performer with 3 rating? Difference and advantage of super performer with crown. या सिंपल है भाई, स्वप्निल, सुपर परफॉर्मर जो है वो एड से बेटर मोमेंटम है, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी है, बेटर प्राइस है। सो वी वांटेड टू कम आउट एड से थोड़ा बेटर कौन सा चीज है, सो दैट इज वेयर द सुपर परफॉर्मर कम्स इनटू द पिक्चर। सो सुपर परफॉर्मर इज द मीन्स वो एड में समझो 5,000, 5,000 तो नहीं होंगे, जैसे 500 स्टॉक होंगे, सुपर परफॉर्मर में 10-20 होंगे। दिस आर द मेन पिक्स ऑफ इट। सो या सुपर परफॉर्मर्स आर बेटर देन द एड वैल्यू। We have any other question? I think so. Somebody wanted to talk with me. Uh, Uh, yeah, we have anybody who wanted to talk? I have answered few questions, but Yeah, one okay, question okay. that was common was what is the frequency of rebalancing, Yeah, or yeah, what is the okay. frequency of churning, depends on weekly, monthly, or quarterly.
Okay, okay, fine, fine. I think so. We are good to go. If any questions, guys, if we have missed out to answer, you can put it on. I'll put it email address to it. So I think so. Let me put it into for everyone. Let me do it for everyone. You can put it at contact@turtlewealth.in. And if you have any questions related to anything, we would be happy to answer. Just a second. Yeah, There was one person called Kunal. He wanted yeah, to yeah. He ask the wanted to question. talk. If you Yeah, can, yeah, yeah, yeah. if you can unmute him. Uh, okay. Kunal Raginwar. Just give me a minute. Yeah, Kunal, you can go ahead. Hello. Hi, Yeah, sir. Kunal. So suppose there is an X stock, right, which has gone up which has become 3x. And until the last quarter, suppose earnings were all time high, everything was great, fantastic. Now, emotionally, जब ये 3x जाता है and you have a horrendous quarter. Horrendous मतलब like the TTM figure ही बदल गया. एक quarter की वजह से, खराब होने से, only because of one quarter, पूरा TTM is now not at all time high. But because it is already a 3x bagger, उसका strength और exit price के ऊपर ही रहेगा वो. So in that situation, what do you do normally? So I'll give you an example. So we have a stock called Axis Kids. ठीक है? Same. सेम है क्या? Same. मेरा 700 से एंट्री है हाँ, तो ठीक है. वो अभी प्रॉब्लम रिजल्ट हो आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या आया. ठीक है. राइट सो यार मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल है. मेरा जो एग्जिट पॉइंट है ना, वो मैं रिलीजियसली उसको पकड़ूंगा कि भाई ये एग्जिट पॉइंट के नीचे चला गया, मैं निकल जाऊंगा. अभी क्या होगा, देयर कैन बी पॉसिबल कुणाल दैट स्टॉक विल डू गुड आफ्टर गुड टाइम. शायद फॉर एग्जांपल वो स्टॉक कोई जो एक्सिस का रीजन भी आया कि उसको कुछ डिफर हो गया था पेमेंट समथिंग समथिंग. बट पॉइंट इज दैट इफ द स्टॉक इज नॉट बैड तो उसको है ना इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा. पर एक्सिस तो चलो 5% की सर्किट है, तो देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है. सो मेरा एग्जिट पॉइंट क्या है ना, वो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है. और मुझे कोई उसमें वो नहीं करना है कि कंपनी कल उठ के बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी. वो जब करना हो वो करेगी. आई शो यू व्हाट इज द एग्जिट पॉइंट. जस्ट गिव मी अ मिनट. वो फिर से देयर इज अ लॉगिन प्रोसेस. ठीक से एक्सेस किड्स. सो मुझे पता है स्टॉप लॉस क्या है, पर आपको मैं दिखा रहा हूँ. सो माय एक्सिस किड्स एग्जिट पॉइंट इज 1200 रुपीज. हेलो, एम आई या ऑडिबल? या या. so सो that टिल दैट आई वुड बी हैप्पी टू होल्ड. from 1800 you would be okay with getting out at हाँ, बट 1200, वो बड़ा भी इतना है ना. right? तो जैसे फॉर एग्जांपल आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सर्टेन कंपनीज जिसका एग्जिट पॉइंट डीप था, इसीलिए वो लॉन्ग टर्म वो होल्ड हुआ. वरना क्या होता है, 5-10% में आप निकल जाओ तो ऐसी छोटी कंपनी के लिए 10-15-20% वॉलेटिलिटी बहुत ईजी है. बराबर है. सो आप देखो कि 163 डेज में इट इज गिवन 42% रिटर्न. आपका आपका ज्यादा हुआ होगा, मैं तो ये मेरे प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ ये राइट आपकी. राइट. सो होगा, देयर कैन बी पॉइंट. और दूसरा मैं आपको एक चीज बताता हूँ. मैंने ना मेरी लाइफ में स्टॉक को बहुत पर्सनली ले लिया है. आप ऐसा सोचो कि 11 प्लेयर की टीम है, सब नहीं परफॉर्म करने वाले हैं. 2-3 बुरा करेगा परफॉर्म. तो तब आपको ऐसा लगने का कि यार ठीक है, अभी तक मेरे एक्सिस ने मुझे जिताया था, कल उठ के अभी कोई और विनर जिताएगा मुझे. सो डोंट टेक इट पर्सनली. ये स्टॉक में अपग्रेड आएगा तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. राइट. ठीक है. आई थिंक सो. Understood. Thank you. बढ़िया. और पेन पॉइंट इज सेम. सो या. Same. So Luckily, yeah. I'll tell you another example is SBI. So SBI we have from 300 rupees in portfolio. Is SBI bad company? No. Is कोई problem? No. But my stop loss is 680 rupees. Or maybe you look forward for what I was talking was M&M. Mahindra and Mahindra. Great, I think so. I love the car product.
So we made really very good money. You exited and find new opportunities, right? Right. Like, so I think it is, I am thinking about it a little bit emotionally because मेरा अभी मैंने एक वो कार ट्रेड करके एक कंपनी लिया था Hmm. and it was 80% up and I was like हाँ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, but मेरा Yeah, exit point was at break even. तो वो yeah. पूरा break even दे के then वो thought process में आ गया कि यार एक्सिस Yeah, केड we भी ऐसा also होता we है also तो exited at a very good point, and yeah, Cartrade was with us also. But yeah, see what happened after Cartrade, like for us was we exited at maybe 2000 2100. I don't remember the exit price, right? 2200 something. We exited. Now वहां से जो पैसा वो जो स्टॉक में डाला वो बढ़ गया ना. So that's okay. Certain times what happens is that because we so much love our companies, we don't love the profits of the portfolio. perfect. Yeah, na? Boss, Yeah. great. Thank If anything, guys, thank you for joining on Saturday afternoon. Wish you the best wealth creation. Anywhere Turtle can help you on the wealth creation, we would be very happy. Have a great day ahead.